Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, I present my IGNOU assignment of MWG 011, a woman in economy. In this assignment, we have three questions: question 1, question 2 and 3, and question 2 and 3. Question 2 and 3 are for 20 marks, so we have to write these second and third question in 1000 words. And for question 1, in question 1 we have three parts, and each part has different marks, so you can see it here. Question 1, part 1, 25 marks, part 2, 15 marks, and part third, 20 marks. So question 1, part 1 should be right in 1100 to 1200 words, and question 1, part 2 should be right in 700 to 800 words, and question 1, part 3 should be right in 1000 words. So in this question, first question, we have the question said that we have to read this article, which is come in the Times of India newspaper. So first we read this article. You can find the link in the assignment PDF, and this article is on returnship initiatives are having a remarkable impact on women. So just read this article. 3 years ago, Kasturba Vichum Sharvan, her husband, and a 3-year-old daughter were thrown out of their house by her in laws. The in laws who wanted her to get more dowry did not even allow them to take their clothes. Chauvin had filed an FIR against them for abuse and violence. I did not want to look like a coward in front of my daughter when she grows up, he says. And Chauvin had been a system administrator at a large supermarket chain since her graduation from an engineering college in Bangalore. But with the house gone and the regress of her visits to courts and police stations, she quit the job. For months later, the thought of returning to work had not struck her till one day she happened to see VMware advertising their तारा प्रोग्राम. तो वेयर एक उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी होगी तारा प्रोग्राम के लिए. तारा प्रोग्राम उसे बहुत फ्री कोर्स था जो वुमेन को ऑफर कर रहा था वी एम वेयर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, ताकि वो वी एम वेयर में काम कर सकें. तो जो लेडी थी उन्होंने ये ज्वाइन किया था कोर्स. देन उसके बाद उसकी वजह से इनको हेल्प मिली. उनके हस्बैंड ने एनकरेज किया एंड ब्रदर ने भी. शी अप्लाइड, गॉट इन, एंड 3 months completed all 3 levels of the course. उसने 3 महीने के अंदर सारी लेवल कंप्लीट कर ली. तो देन उसके बाद यहाँ पे सारी वुमेन्स का अलग अलग दे रखा है कि किसने क्या क्या कैसे किया है. देन उसके बाद शी क्रिएटेड अ न्यू रिज्यूमे, अपडेटेड हर लिंक्डइन profile. In September last year, she was reselected by a major global technology company as senior VMware engineer. For 4 months later ago, she moved to another major global tech company in an even bigger role. In the meantime, she also did multiple other courses in emerging tech in Microsoft Azure and Google Cloud. तो बता दें कि उन्होंने बहुत इन्जॉय किया लर्निंग को, एंड वो VMware को कभी नहीं भूल सकती. रिटर्नशिप प्रोग्राम जो था उसने बहुत सारी वुमेन्स को हेल्प किया है. वो प्रोग्राम जो था सिर्फ वुमेन के लिए था, एंड हैविंग अ रिमार्केबल जो उसने इम्पैक्ट छोड़ा है. अनफॉर्चुनेटली देयर इज
not enough of them, and many that exist aren't scaling. Consulting company IGNOU recently estimated that more than 1 lakh women left India Inc. over the last 5 years, and only 2% of them have reintegrated through structured internship programs. Genov looked at 40 programs and found that intakes are low and most aren't scaling. तो ये वुमेन के बारे में ये बता रहा है कि अ, कितने ज़्यादा वुमेन हैं जिन्होंने वर्कफोर्स दोबारा ज्वाइन करने का ट्राई किया है, जिन्होंने छोड़ दिया. नंबर ऑफ वुमेन हु लेफ्ट द वर्कफोर्स इन लास्ट 5 years, 1 लाख से ज़्यादा वुमेन्स ने छोड़ दिया है. ग्लोबल CEO इन इंडिया 25,000, engineering research and development function 10,000, only 2% of them reintegrated through returnship programs. ओनली सिर्फ 22% है जो दोबारा ज्वाइन हुए हैं वर्कफोर्स में. तो जो टॉप रीजंस है वुमेन क्यों ड्रॉप कर दिया, उसके बाद क्यों ड्रॉप किया था वुमेन्स ने. फर्स्ट आता हमारा मेटर्निटी, फिर हो जाता है केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलोकेशन हो जाता है, वो माइग्रेट कर जाती हैं, वर्क प्लेस बैरियर्स आते हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रोल स्टेगनेशन होता है. इन 6 रीजन्स की वजह से वुमेन्स ने जो था ड्रॉप किया था वर्कफोर्स. देन उसके बाद निवेदिता जो है हेड ऑफ द इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी प्रैक्टिस एट जिनोव सेज द प्रॉब्लम इज companies look at these programs as inclusion and diversity initiative. They should be looking at it as a primary channel of hiring. The program needs to align with the larger business cause a program management team needs to run it. Gino found that Morgan Stanley program in India is the best by far. The investment bank started the program in India in 2015. Today, it's the largest program that it has across the world. In the early years, we used to get 7,000 to 700 to 800 applications. Now it's a few thousand, says Rajat Mathur, head of India HR at Morgan Stanley. The key of the success of the 12-week program has been that the selection into it is tied to a job role that needs to be filled. They are not coming to do a 3-month internship. They are looking at it as a stepping stone into Morgan Stanley, Mathur says. तो जो मॉर्गन स्टैनली जो एक कंपनी है उन्होंने भी 3 मंथ का ऐसा प्रोग्राम चलाया था री इंटर्नशिप का. तो उसमें भी जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया वो उसको इस तरीके से देख रही थी कि इसके थ्रू ही हम जो जॉब रोल अचीव कर पाएंगे अपना उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में. तो वो ऐसा होता था कि एक पर्टिकुलर जॉब रोल के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम होता था वो मॉडिफाइड होता था. There are other important elements. The internship experience is centered around the job. This is open for the intern. Programs gives the women flexibility to test their home and personal arrangements, since they may have to leave kids' parents behind, uh, and they are exposed to those who have come back to work through the program and to Morgan Stanley's senior executive. तो जो एक नेहा दीक्षित जो है वो बताती हैं कि उन्होंने जो प्रोग्राम है 2015 वाला किया था, एंड शी हैड taken a 5-year break to raise her children after she had to return to India from London. Mumbai, she says, was new to her. She didn't
want to leave her children in anyone's else care. And post her internship at Morgan Stanley, she was inducted as vice president of tech and has since been promoted as executive director, looking at wealth management technology and managing teams across India and New York. तो देन उसके बाद जो सोनाली है, देन उसके बाद जो सलोनी है, सलोनी कोचर was a build and configuration manager at News International in London. When she had to return to India, she took a 7-year break to raise her children. She was part of Morgan Stanley's 2019 batch of intern and is now VP and COO of firm risk management. Returning woman says Mathur says us bring so much depth of knowledge. Our business units are asking for more of them, he says. तो यहाँ पे ये आर्टिकल ख़त्म होता है. देन उसके बाद हमें इससे ये पता लगा कि वुमेंस को क्यों छोड़ना पड़ा. इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया है कि वुमेंस ने क्यों छोड़ा, रीजंस. एंड उसके बाद जिन वुमेंस ने ज्वाइन किया उनकी थोड़े डाटा दिया गया है कि 2% जो वुमेंस है सिर्फ उन्होंने ही ज्वाइन किया है दोबारा वर्कफोर्स को. जो इतनी सारी वुमेंस है जो छोड़ा था उन सब ने नहीं किया है. तो ये सारे जो रीजंस है हमें तो पहले ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताना पड़ेगा. जो क्वेश्चन होगा हम क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन मोस्टली हमें ये बताना पड़ेगा कि रीजंस क्या हैं. रीजंस जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं. देन उसके बाद और क्या हो सकता है. देन उसके बाद हमें कॉजेज़ बताने पड़ेंगे, कंसिक्वेंसेस क्या हुए थे. देन उसके बाद हमें वुमेन पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, ये सब उनके बारे में सब बताना पड़ेगा. ठीक है. तो ये वाली जो हमने पढ़ा, नेहा दीक्षित, कस्तूरबा श्रवण का हमने सबसे पहले पढ़ा था. देन उसके बाद निवेदिता का पढ़ा था, सलोनी का भी पढ़ा था. ये रजत माथुर है, इनके बारे में ये वही दे रखा है. ओके. तो हम अपने अब असाइनमेंट पे चलते हैं. असाइनमेंट में क्वेश्चन क्या दे रखा है. असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इज़ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क so low given the fact that they are getting educated better than 50 years ago. Justify your arguments by using theoretical assumptions, giving examples and using macro data sets. देखो हमें इसमें बताना है कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है पेड वर्क में वो कम क्यों है. पेड वर्क में यहाँ पे जो इग्नू की बुक में पेड वर्क डिफाइन किया गया है वो ट्रेडिशनल वर्क या फिर आप कह सकते हैं कि आउटसाइड वर्क जो हम बाहर जाके काम करते हैं वो डिफाइन किया गया है. ये डिसाइड नहीं किया गया है कि जो घर का काम होता है जो वुमेन मेनली करती है लाइक कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब वो सब इंक्लूड नहीं होता है पेड वर्क में. जो बाहर का काम होता है जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं वो इंक्लूड किया गया है. ठीक है. तो पेड वर्क में उनका पार्टिसिपेशन कम क्यों है, इज सो लो गिवन द फैक्ट. हमें फैक्ट ये देना है कि वो इवन दो वो उनकी जो एजुकेशन है वो अब ज़्यादा बेटर हो गई है एज़ कम्पेयर टू 50 ईयर्स अगो. राइट. तो ये हमें जो है स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है. जस्टिफाई और आर्ग्यूमेंट कि हम इससे सहमत है या नहीं है. एंड बाय यूजिंग हमें यूज़ क्या करना है, थियोरेटिकल अजम्पशंस यूज़ करनी है, एग्जाम्पल देने हैं एंड डाटा यूज़ करना है, मैक्रो डाटा सेट्स यूज़ करना है. ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इसका आंसर हम कैसे देंगे. The participation of women in paid work has increased significantly in past few decades, but it still remains lower than that of men in most countries around the world. This is a complex issue that cannot be explained by a single factor. ये complex issue है जो किसी एक फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. द पर्पस ऑफ दिस एसे इज टू एक्सप्लोर सम ऑफ द थियोरेटिकल assumptions and macro data sets that could
help us understand why women's participation in paid work is still relatively low despite the fact that they are getting educated better than 50 years ago. ठीक है, ये भी एक फैक्ट है कि वो उनकी बेटर एजुकेशन मिल रही है एज कम्पेयर टू 50 ईयर्स अगो, राइट. तो वन थियोरेटिकल अजम्पशन यहाँ पे है दैट कुड एक्सप्लेन द लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पेड वर्क इज द जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर. बिकॉज जेंडर डिवीजन है लेबर का, ये एक असम्पशन है. दिस रेफर्स टू द सोशल एंड कल्चरल norms that assigns different roles and responsibilities to men and women based on their gender. जो ये बताता है कि जेंडर के अकॉर्डिंग उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर दी गई है, डिफरेंट फॉर मैन डिफरेंट फॉर वुमेन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड. जिसमें ये बताया गया, जिस थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि वुमेन जो है उनको ये समझा जाता है कि वो ख्याल रखेंगी घर का, बच्चों का, उनकी देखभाल करेंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे. ठीक है, वाइल और मैन को ये समझा जाता है कि वो बाहर जाएंगे, बाहर जाके काम करेंगे एंड घर की जो ज़रूरतें हैं लाइक पैसे उनको चाहिए हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए मनी चाहिए होता है, उन पे स्पेंड करेंगे. ठीक है, ये सब है. देन उसके बाद the division of labor has been deeply ingrained in many societies for centuries and it is still prevalent in many parts of the world. ठीक है, तो ये जो डिवीज़न है ना वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में, सब जगह, हर एक कंट्री में हो रखा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से. ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में है, हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को. बट येस, we have to support women to come out and work outside their homes. Yeah, so women who try to enter the paid workforce are often faced with resistance from their families and communities who view their work outside the home as a threat to traditional gender roles. Additionally, women often face discrimination in the job market due to stereotypes and biases about their abilities and commitment to paid work. ठीक है, उनको बहुत, अगर जो वुमेन आगे भी आना चाहते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है. फर्स्ट तो उनकी फैमिली एंड जो आसपास की कम्युनिटीज, सोसाइटीज़ जो होती है उन वही रोक टोक लगाती हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, ये तुम्हारा रोल नहीं है, ये तो लड़कों का काम है. ये सब आपने भी आसपास अभी सुना होगा. अगर कोई वुमेन, कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है तो आपने भी कभी फील किया होगा. जो मैंने अपने आसपास सुना है मैं वो बता सकती हूँ, और ऐसा होता भी है, इट्स रियल. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए थोड़ा स्पेस बना सकते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े जॉब मार्केट में, उनको स्टीरियोटाइप्स कमेंट्स ना करे, उनके लिए बायसेस ना हो. इस तरीका के माहौल तो बनाए एटलीस्ट जो आगे आ रहा है उनके लिए. जो आगे नहीं आना चाहते हैं वो बात अलग है, जो आगे आ रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसके लिए तो थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं ना, ताकि वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करे पर्सन, राइट. तो हमें यही सोच के अपना काम करना चाहिए. एज अ कलीग आपको ये सब सोचना चाहिए अगर आप वर्कफोर्स में हैं तो. देन उसके बाद हम बताते हैं कि एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो सपोर्ट करते हैं दिस थ्योरी को. फॉर एग्जांपल, स्टडीज हैव शोन दैट वुमेन आर मोर लाइकली टू वर्क पार्ट टाइम और टेक करियर ब्रेक्स टू केयर फॉर चिल्ड्रन और एल्डरली relatives, which can limit their opportunities for career advancement and reduce their earning potential. Moreover, gender pay gaps persist in many countries. जो जेंडर पे गैप है वो पहले से ही कंट्री में है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है, मीनिंग दैट वुमेन अर्न लेस दैन मैन फॉर सिमिलर वर्क, फर्दर डिस्करेजिंग वुमेन from participating in paid work. Another theoretical assumption that could explain the low participation of women in paid work is the concept of the motherhood penalty. यहाँ पे motherhood penalty ये समझना बहुत important है. What is this?
ये क्या रेफर कर रहा है? तो ये रेफर कर रहा है द डिस्क्रिमिनेशन दैट वुमेन फेस इन द वर्क फोर्स व्हेन दे बिकम मदर। जो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और भेदभाव जो होता है वो तब फेस करती है मदर जब वो मदर बन जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, एम्प्लॉयर्स ऑफन अज्यूम दैट वुमेन हैव who have children will be less committed to their jobs and less productive than their male colleagues. Uh, this can result in lower pay, fewer promotions, and fewer opportunities for career advancement for women who have children. This discrimination can also discourage women from entering the paid workforce in the first place, as they may anticipate negative consequences if they decide to have children in the future. तो मैक्रो डाटा सेट्स क्या कहते हैं? मैक्रो डाटा सेट्स ऑल कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू why women's participation in paid work is still relatively low. फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पोर्टल था, जेंडर डाटा पोर्टल, उसमें उन्होंने लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन उन्होंने कहा वो इज़ लोअर देन दैट ऑफ men is almost ever country every country in the world. In some countries such as Saudi Arabia and Iran में जो है जो gender gap in labor workforce participation is particularly wide. सऊदी अरेबिया और ईरान में बहुत ज़्यादा है, with less than 20% of women participating in the paid workforce. In other countries such as Sudan and Denmark जो है जो gender gap in labor force participation is relatively small, with around 80% of women participating in the paid workforce. Another macro data sets also provide evidence for the low participation of women in the paid work. For example, according to the World Bank, the female labor force participation rate in low and middle income countries was only 47.3% in 2019 compared to 75.7% for men. Similarly, in high-income OECD countries, the female labor workforce participation rate was 63.7% in 2019, while male participation rate was 78.75%. One possible explanation for these differences is the level of gender equity in each country. Countries with more gender equality tend to have higher rates of women's labor force participation, as women are more likely to have access to education and job opportunities. For example, Sudan and Denmark, women have access to high quality childcare, parental leave, and flexible working arrangements, which make it easier for them to balance work and family responsibilities. In contrast, in countries with low level of gender equality, women may face more barriers to entering paid workforce, such as limited access to education, training, discriminatory laws and regulations, and cultural norms that discourage women from working outside the home. One of the main reasons for the low participation of women in paid work is gender discrimination. Women face significant challenges in accessing education, training, and job opportunities. Even when they are qualified, they are often given the same opportunity as men. Discrimination against women is deeply entrenched in many societies, and it can be difficult to eradicate. For example, in many countries, women are not allowed to work outside the home
or are expected to prioritize their family responsibilities over their careers. Another fact that contributors to the low participation of women in paid work is the lack of affordable childcare. Many women are unable to work outside the home because they cannot afford childcare or because they cannot find suitable care for their children. This is particularly true for single mothers who often face significant challenges in balancing their work and family responsibilities. Without affordable and accessible childcare, it can be difficult for women to participate in paid work. Macroeconomic factors also play an significant role in the low participation of women in paid work. For example, the global economic recession of 2008 had a disproportionate impact on women. Many countries, many industries uh, that employ a large number of women, such as hospitality, retail, and healthcare, were hit hard by recession. As a result, many women lost their jobs and their participation in paid work declined. Theories such as human capital theory and the dual labor market theory can help explain why women's participation in paid work is still low despite increased education. Human capital theory suggests that education and training are the key determinants of an individual's productivity and earning potential. According to this theory, women's improved education should have led to increased participation in paid work. However, this has not been the case. Dual labor market theory suggests that the labor market is divided into two segments: primary sector that offers a stable, well paid, and a secondary sector that offers low paid, less stable jobs. Women are more likely to be employed in the secondary sector, which makes it difficult for them to achieve economic stability and upward mobility. In conclusion, women's participation in paid work is a complex issue that cannot be explained by a single factor. The gendered division of labor, the motherhood penalty, the macro level factors such as gender equality all play a role in determining why women's participation in paid work is still relatively low in many parts of the world. To address this issue, policymakers and employers need to take a comprehensive approach that includes measures to promote gender equality, provide support for working mothers, and eliminate discrimination in the workplace. Then our second part of the first question is suggest measure that will help retaining women workforce in labor market. तो हमें थोड़ा सजेशंस देने हैं इसमें, तो हम ये बताते हैं कि वुमेन जो हैं ट्रेडिशनल में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है इन द वर्कफोर्स, जो and many countries have made significant progress in increasing the number of women in employment. However, despite these efforts, many women leave the workforce due to a variety of factors. Retaining women in the labor market is crucial for achieving gender equality and reducing gender pay gap. Here are some measures that can help in retaining women in the workforce. Like हमने ये suggest किया है कि फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स होने चाहिए वुमेन के लिए. उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है. पार्ट टाइम जॉब्स लाइक ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऐसे चल रहा है जो, सो दैट वो बैलेंस कर सके अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्क को. ये सब मैंने लिखा है, आप लिख सकते हैं इसको. एंड अगर आपको इस असाइनमेंट के PDF चाहिए, देन मैसेज मी ऑन माई Instagram ID. I will send it to there.
सो द सेकंड आता है हमारा इक्वल पे होना चाहिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो काम तो अब पूरा कर रही है लेकिन उनको पैसे कम मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको क्या होगा कि काम ना करने का एक एक ताकि उनको ऐसा ना लगे कि काम वो पूरा कर रही है लेकिन पैसे उन्हें कम मिल रहे हैं, तो वो काम अच्छे से करेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उनको करियर में उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिनसे उनका करियर जो है अच्छा हो जाए। उनके स्किल्स पे उनके स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, उनके करियर में हेल्प होनी चाहिए, उनको मेंटरिंग ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इंक्रीज जिसकी वजह से क्या होगा कि डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, विच कैन लीड टू कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। देन आता है हमारा सपोर्टिव वर्क प्लेस कल्चर। जो हमारी वर्क प्लेस है वो सपोर्टिव होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमको एज अ वुमेन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज अ कलीग, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए हमारी फीमेल कलीग्स के लिए जो उनके लिए सूटेबल हो, उनका कंफर्टेबल फील हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेटरी हारस ना करें। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो वर्क पे काम करना छोड़ देती है ज़्यादातर। देन उसके बाद आता है चाइल्ड केयर सपोर्ट। हमें उन्हें सपोर्ट देना चाहिए ताकि उनके बच्चों का ख्याल रखे सके। वो गवर्नमेंट को ऐसी सब्सिडीज़ बनानी चाहिए या फिर ऐसी कोई स्कीम वगैरह निकालनी चाहिए जिससे ये हो सके। देन हमारा आता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़। इसके बारे में भी गवर्नमेंट को ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए वर्क प्लेस के लिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर पे गैप नहीं होना चाहिए, एंड जो ट्रेनिंग है वुमेन एंड मेन को इक्वली सेम मिलनी चाहिए दोनों को। देन उसके बाद हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स आता है। दोनों को सेम ही बेनिफिट मिलना चाहिए बिकॉज वो दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो दोनों को सेम हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स एंड पेड टाइम ऑफ, दोनों को पेड लीव मिलनी चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये सब मिलना चाहिए। एड्रेसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो हमें एड्रेस करना चाहिए जेंडर स्टीरियोटाइप पर, जो कि बहुत ही गलत है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड बायसनेस बिल्कुल ही ख़त्म करनी चाहिए वर्क प्लेस पर। वो एप्लीकेबल नहीं होती है, वो टॉलरेट नहीं होता है, तो उसको कम करना चाहिए। देन उसके बाद सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। देन आता है हमारा डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। हमें एनालाइज करना चाहिए कि कैसे कैसे कितना पे गैप हो रहा है, डाइवर्सिटी कितनी है, रिटेंशन वो रेट क्या है, ये सब कुछ। देन हम इन कंक्लूजन ये बता देते हैं, इस सब को कंक्लूड कर देते हैं कि रिटेनिंग वुमेन्स को दोबारा वर्कफोर्स में लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट स्टिल वी फेस चैलेंजेस एंड हमें ये सब करना चाहिए। दोबारा से वुमेन्स का जो टैलेंट है उसको वर्क प्लेस उनको अपनी जगह मिलनी चाहिए। सो देन आवर थर्ड क्वेश्चन विल बी, what will be the impact of increased female labor force participation and retaining female labor force on Indian economy?
तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर हो, इंक्रीज्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हुआ तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड रिटेनिंग फीमेल लेबर। और जो हम फीमेल लेबर जो है उनको दोबारा से जो फीमेल चली गई थी छोड़ के वर्कफोर्स, उनको अगर दोबारा से हम चाहते हैं कि वो वर्कफोर्स पे आए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट बताना है। तो अब मैंने यही बताया कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। फीमेल लेबर फोर्स एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट आर intricately linked, involve change in the economic growth, literacy, fertility rate, and social norms, among other variables. It is critical to understand women's employment. To increase employment quality, policies should target both labor demand and supply. Expanding secondary education is critical, but so is providing jobs for women. One of the most critical aspects is that the females who are addressing the topic of women's rights and protection in India are doing it positively. Women have battled to achieve social prominence and a respectable position in society from antiquity to the current day. At the time, Indian women were in urgent need of laws that would elevate their social status and provide enough protection from physical and psychological torture. Women's employment is viewed as a key sign of economic opportunities and women's contribution to economic success. India women's Indian women's labor participation rate WPR has been declined for several decades. It decreased from 29.6% in 1983 to 21.9% in 2011-12 and 6 and to 16.5% as measured by the most recent periodic labor force survey 2017-18. Not only is the rate of female participation in the labor force decreasing, but so is the absolute size of the female labor force. Women's diminishing involvement in the labor sector has subsequent and substantial economic repercussions, giving India's current demographic mix appears to be favorable. India has the world's youngest working population in the 15 to 34 age bracket and is currently considered as the world's youngest country. The advantages of the demographic dividend are more likely to be evident if women are not employed. It is crucial to underline here that actually entering the labor force does not guarantee women economic security. The quality of employment is especially critical since it reflects the standing of women in the labor force. In some recent years, there have been an increase in female labor force participation in Indian economy. The impact of an increase in female labor force participation and retaining women in labor force as follows. तो ये 2 पेज का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, देन उसके बाद मैं बता रही हूँ कि फीमेल का जो इम्पेक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, वो इंक्रीज लेबर फोर्स का। तो जो इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन विल बी डिसाइडेड बाय बोथ एक्सेसिबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड द कल्चर that governs women's work norms. This will be regulated to a certain extent by households' economic circumstances. Women's relative unemployment is likely a reflection of their home preferences, which might have class implications. In
traditional cultures, where the father is assigned the responsibility of providing for the family. Working women can imply economic hardship for the family, and when household income increases, women have a tendency to exit the labor force. This is particularly true when men's economic prospects improve and wage rates rises, allowing women to devote their energies to reproductive work. Poor women bear a double burden of family, labor, and outside work, providing compelling reasons for them all to be able to transition out of labor as household income increases. On the other hand, highly educated women can afford to employ domestic servants and therefore engage in the labor market. Additionally, economic and cultural factors interact. Women's salaries increase and societal standards relax. They are more likely to participate in non economic activities. Women's labor supply, acting as a safety net for households, is also consistent with declining female labor participation rates as households economic condition improves. Increased access to education, as indicated by the increase in student employment, may account for the decline. One of the most significant impacts of increased female labor force participation has been an economic growth. Studies have shown that women's participation in the workforce can have a positive impact on GDP growth as it increases the overall labor force and productivity levels. In India, this effect has been especially pronounced, with research indicating that a 10% increase in labor force participation could lead to 1.3% increase in GDP growth. Moreover, increased labor force participation has also helped to address labor shortages in certain sector of the Indian economy. For example, the healthcare sector, which has traditionally been dominated by women, has seen a significant increase in female participation over the past few years. This has helped to address shortages of workers in this sector, which is essential for the country's overall health and well-being. Another impact of increased female labor force participation would be on household income. Women work. When women work, they contribute to an overall income of the household, which can help to lift families out of poverty. Studies have shown that when women's income increases, they tend to invest more in their families, include their children's education and health. This in turn can lead to better income outcomes for children and future generation. Increased female labor force participation could also lead to greater gender equality. Women who work outside the home often have greater autonomy and decision making power, which can lead to reduced gender based discrimination and violence. This can also help to challenge traditional gender roles and stereotypes, which can have a positive impact on society as a whole. Increased female labor force participation could also lead to greater diversity in the workforce. Having more women in the workforce can bring greater diversity of perspectives, which can lead to increased innovation and creativity. In conclusion, the increased female labor force participation and retention of women in the workforce can have a profound impact on the Indian economy. Not only does it contribute to economic growth, but it also promotes gender equality and women's empowerment. By promoting gender equality and empowering women, India can build a more inclusive and equitable society that benefits everyone. These data suggest
unequivocally that economic development alone is sufficient to increase women's economic participation. The process of growth is equally critical. Policies that foster growth in women foster growth in women friendly industries are critical for women's labor force participation to increase. The challenge in comprehending women's economic growth is that it is influenced to a greater extent than men's economic activity by both market pressures, external factors, and household and family setting. Internal forces. A distinct set of measures will be required to push women to overcome social barriers to labor force participation. India has made considerable strides in increasing female education access with an increase in the number of women of working age attending school. देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या है वर्क फ्रॉम होम के फॉर वुमेन वर्कर्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू हमें बताना है. पहले तो मैंने ये बता दिया कि वर्क फ्रॉम जो कंसेप्ट था वो मोस्ट पॉपुलर कब था, कोविड के टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर था. तो मैंने ये सब बता दिया थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में. आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं. देन उसके बाद मैंने प्रॉज बताए हैं, प्रॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कि वुमेन वर्कर्स का इसलिए क्या प्रॉज है. ठीक है. देन फर्स्ट जो प्रॉज है कि मतलब एडवांटेज है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने के लिए. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ये सारा मैंने असाइनमेंट खुद से बनाया है. तो उसके बाद ये तो हो गया. तो देन उसके बाद मैंने इसका एग्जांपल भी दिया है. यहाँ पे मैंने रिया का केस कंसिडर किया है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. आप किसी और का नेम भी लिख सकते हैं रिया की जगह. देन सेकंड जो है प्रॉज वो है रिड्यूस्ड कम्यूट का है. टाइम कम लगता है. रिड्यूस कम्यूट टाइम जो होता है टाइम आप इसको नोट कर सकते हैं. टाइम कंज्यूम हो जाता है, स्ट्रेसफुल नहीं होता है एंड स्ट्रेस भी रिलीफ होता है वर्क पर अगर हम अपनी कंफर्टेबल जगह पर होते हैं तो. देन मैंने इसका एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया एग्जांपल. आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं. आप कोई और सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं. आप इस एग्जांपल को थोड़ा फ्रेम कर सकते हैं, अगर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. मैंने एग्जांपल लिया है. देन हमारा थर्ड जो आता है प्रॉज वो है बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. हम बैलेंस कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ्स. अगर हमें वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो हम अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने इसका एक एग्जांपल दिया है. आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं. आप इस असाइनमेंट से हेल्प ले सकते हैं. देन हमारा इस एग्जांपल ख़त्म होने के बाद आते हैं कॉस्ट सेविंग. कि कॉस्ट की सेविंग होती है जो एक्सपेंसेस होते हैं एक ऑफिस जाने में और वहाँ की ड्रेस क्लोथ्स वगैरह लेने में. यहाँ पे आया मैंने ट्रांसपोर्टेशन, वर्क क्लोथ्स जो होते हैं एंड बाकी सब जो चीज़ें होती हैं वो सब एक्सपेंसेस जो है कट हो जाते हैं. यहाँ पे फिर मैंने एक एग्जांपल लिया है. प्रिया का केस है. यहाँ पे कोई और सा भी नेम ले सकते हैं. सोनाली, सलोनी, सब कुछ. नेहा, रिया, whatever you want to choose. देन उसके बाद मैंने ये भी बताया कि थोड़े बहुत चैलेंजेस या कॉन्स कह सकते हो आप उनको, वो फेस करने पड़ते हैं.
फॉर एग्जांपल ब्लरिंग ऑफ वर्क लाइफ बाउंड्रीज नहीं बचती हैं प्रोफेशनल और वर्क लाइफ में। जब आप वर्क फ्रॉम होम होते हो तो आप ऐसा लगता है कि आपको काम के बीच में कोई बुला ना ले, आपके घर के मेंबर नाराज़ ना हो जाए कि आप उनका काम नहीं कर रहे। एंड वुमेन के लिए तो ये ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज उनके घर का भी उनको संभालना होता है, साथ के साथ उनको काम भी करना होता है। इस वजह से उसके बाद फिर उनकी चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि बच्चों को फूड प्रोवाइड कराना है, क्लीनिंग वॉशिंग ये सब कुछ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक मदर का एग्जांपल है जाने का, जो 2 बच्चों की माँ है, वर्क फ्रॉम होम है। देन उसके बाद इंक्रीज्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं, कभी कभी बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है खुद से। जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्रीज डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, वॉशिंग वगैरह सब कुछ। देन उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये रहा। थर्ड जो है चैलेंज, वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता अगर वो वर्क फ्रॉम होम लेती है तो। दैन उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। देन उसके बाद आइसोलेशन एंड लोनलीनेस होती है, यहाँ पे मैंने अगेन एग्जांपल लिया है ये वाला। देन उसके बाद मैंने इन कंक्लूजन ये थोड़ा कंक्लूड कर दिया कि कैसे क्या है, आप ये कंक्लूजन नोट कर सकते हैं, इसको पोज कर सकते हैं। ये बताया कि पॉलिसी मेकर्स को कैसे क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर्स एंड पॉलिसी मेकर्स को प्रॉज एंड कॉन्स, उनको थोड़ा ऐसे पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए और थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेम करना चाहिए वुमेंस के लिए। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड पैंडमिक ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द लाइट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इंडियन सिनेरियो हमें डिस्कस करना है, जो इम्पैक्ट पड़ा था कोविड-19 पैंडमिक का वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वो हमें डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोविड पैंडमिक हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डिसरप्टिव इवेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, affecting virtually even every aspect of our lives, including world economy. Pandemic has caused significant disruptions in the global supply chain, decreased demand for goods service, resulted in widespread job loss, significant cost disruption, supply chain which has affected both production distribution of goods service with border closed and travel restrictions in place. Many countries have experienced a shortage of labor, raw material, other resources needed to produce and distribute goods. This has led to delays in production and shipment, resulting in a decrease in the availability of certain products. Moreover, many businesses have been forced to shut down due to pandemic, resulting in a decrease in the supply of goods and services. Decrease in supply of goods and services has also been accomplished by decrease in demand, as many people have been forced to stay at home due to lockdown, social distancing measures further impacted on the economy. The decrease in consumer spending has led to a decrease in revenue for businesses, which has resulted in widespread job losses. Many businesses have had to lay off employees. Many workers have lost their jobs or been furloughed. Impact of COVID-19 pandemic on the world economy has been widespread, affecting both developed and developing countries.
तो उसने कैसे अफेक्ट किया है, मैंने ये लिखा है कॉज, सब कुछ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टूरिज्म कम हो गया था, सब कुछ है, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज एक क्वेश्चन 1000 वर्ड्स में हमें लिखना है तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद COVID-19 has also highlighted existing inequalities in the world economy. Okay. Low income workers, people. COVID pandemic has also highlighted existing inequalities in the world economy, with marginalized groups being disproportionately affected by the pandemic. Low income workers, color people are of color, and women have been hit by the hardest by job losses and economic insecurity. Moreover, many developing countries have been hit hard by the pandemic with limited resources to respond to the crisis. The pandemic has also highlighted the need for greater global cooperation and solidarity, as the impact of the pandemic has been felt by all countries regardless of their economic status. In response to the economic impact of the pandemic, many governments have implemented economic stimulus packages to support businesses and individuals. These packages have included measures such as cash payment, breakers, low interest loans. Moreover, many central banks have lowered interest rates and implemented technique quantitative easing measures to support the economy. These measures have not been able to fully mitigate the impact of the pandemic on the economy, and many businesses and individuals continue to struggle. तो जो इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट था यहाँ पे मैंने वो डिफाइन किया, 2 पेजेस, दो एंड 2 से ज़्यादा थोड़ा वो एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंक्रीज हो गया, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। देन उसके बाद पैंडेमिक जो है एग्जिबिटेड, उन्होंने इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। इन द लाइट ऑफ द क्राइसिस, Indian government launched Atmanirbhar Bharat initiative to stimulate the economy and promote self-reliance. कि उन्होंने खुद को, गवर्नमेंट ने जो प्रमोट किया, आत्मनिर्भर भारत प्रमोट किया, लॉन्च किया प्रोग्राम, एंड COVID-19 pandemic hit India hard, with millions of people losing their job, businesses shut down. Pandemic disrupted supply chain, causing shortage of goods, services, significantly reduced demand. The hospitality tourism sector were particularly hit hard, with revenue falling drastically due to lockdowns, travels, restrictions. Agriculture sector was also impacted, with supply chain disruptions affecting farmers' ability to sell their produce and inability to migrant workers to travel to farms. Pandemic also had a severe impact on India's export, which declined significantly due to the global economic slowdown. In addition, the country faced challenges in importing essential goods such as medical equipment and drugs due to border closure and supply chain disruptions. In response to the economic challenges posed by the pandemic, Indian government launched the Atmanirbhar Bharat initiative. The initiative aims to promote self-reliance and reduce India's dependence on imports. Government has announced a series of measures to support various sectors of the economy, including infrastructure, agriculture, manufacturing. Initiative also seek to promote entrepreneurship innovation by providing funding and support to startups. Key aspect of Atmanirbhar Bharat initiative is the focus on local production and consumption. Government launched several initiatives to promote local manufacturing, such as
production linked initiative PLI scheme, which provides financial initiatives to companies to manufacture locally. Government has also announced plans to invest in infrastructure and develop industrial clusters to support local manufacturing. Atmanirbhar Bharat initiative is also expected to have a significant impact on agriculture sector. Government has announced measures to support farmers, including expansion of the ENAM National Agriculture Market Platform to help farmers sell their produce directly to consumers. Us government has also announced plans to invest in food processing and cold storage facilities to reduce wastage and improve supply chain. Atmanirbhar Bharat initiative is also expected to have a positive impact on the startup ecosystem in India. The government has announced a series of measures to support startups, including creating a 10,000 crore rupees fund to provide funding to startups. Initiative also seeks to promote innovation and entrepreneurship by providing training and mentoring to young entrepreneurs. In conclusion, COVID pandemic has had a significant impact on the world economy, with almost all sectors being affected. COVID pandemic has also impacted on the Indian economy, causing disruptions in supply chain, reducing demand and leading to job losses. However, the Atmanirbhar Bharat initiative launched by the Indian government seeks to promote self-reliance and reduce dependence on imports. Initiative focuses on local production, consumption, support various sectors of the economy, promote entrepreneurship and innovation. While it is still early to assess the impact of the initiative, it is expected to have a positive impact on the Indian economy in the term. So here our assignment is done. Thank you for watching the video, and I hope this assignment will help you for making your assignment. So please subscribe my channel, follow me on Instagram. My Instagram ID name is missiasofficer, same as my YouTube handler. So thank you for watching the video. I hope this assignment will help you. And if you need any other assignment, just let me know in the comment section. I will provide the video of that assignment. So thank you.